Welcome back students. In today's video we are going to discuss about the multiplication problems in daily life. Alright, so let's look at examples and solve them together. Ahmed and Ali ate 11 toffees every day. How many toffees will they eat in 7 days? This is a very simple one. हमने find करना है कि 11 times को करना है हमने 7 days पर. So we're gonna write over here the bigger number first and the smaller number next. ठीक है? So let's multiply it. It's very simple. 7 ones are 7 and 7 ones are 7. So the answer over here is 77. So we're gonna write over here Ahmed and Ali ate 77 candies या toffees in 7 days. Right? Remember जब भी आप कोई word problem कर रहे होते हैं solve, so you have to write the answer in the form of sentence in the end as well. Let's look at another example. So we have over here there are 1272 children in a school. If every child has 7 books, ठीक है, इतने students हमारे school में हैं और हर बच्चे के पास 7 book है. How many books are there in total? तो ये हमें क्या बता रहा है कि we have to find कि हर बच्चे के पास कितनी total books बनती हैं. So we're gonna write the bigger number over here on the top. ठीक है, and then we're gonna multiply it with the number 7. ठीक है, single digit number है, it's very easy to solve. 7 twos are 14, so we write 4 over here and 1 will be carry forward. 7 sevens are 49, 49 1 plus 1. इधर हम solve करते हैं rough में. 7 sevens are 49 और इसमें अगर हम +1 करते हैं बिकॉज हमारा कैरी फॉरवर्ड हुआ तो ये बनता है 50. ठीक है, तो 50 में से हम 0 यहाँ पुट करेंगे एंड विल कैरी फॉरवर्ड द नंबर 5 टू द नेक्स्ट नंबर. ठीक है, 7 2s are 14. 7 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 14 होता है और उसमें अगर हम 5 ऐड कर दें तो वो क्या बनता है? 19. So we're gonna write over here 9 and 1 will be carry forward. 7 ones are 7 plus 1 8. So the answer over here is 8,904 books are there if there are 1272 children in a school. और हर बच्चे के पास 7 books हो तो ये total books बनती हैं. ठीक है, so we write over here there are 8,904 books in total. Alright, we have to write the statement as well. Okay, now moving on to the next example. और इसमें क्या है? A man sold packets of balloons with 25 balloons. एक आदमी है, उसने 25 balloons का एक पैकेट सोल्ड करता है. ठीक है, तो if he has sold 13 packets, how many balloons did he sell altogether? अगर उसने 13 पैकेट्स कर दिए हैं तो हर पैकेट के अंदर क्या था? हर पैकेट के अंदर 25 बलून्स थे. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पैकेट है, इसके अंदर 25 बलून्स हैं. ठीक है, तो ये नंबर हो गया 1 पैकेट. नंबर 2 पैकेट हम फाइंड करेंगे तो उसके अंदर भी 25 बलून्स होंगे. नंबर 3 उसमें भी 25 बलून्स होंगे. सो दिस इज इंडिकेटिंग कि हमने क्या करना है, हमने सिंपली इन 25 को कितने टाइम्स ऐड करना है? 13 टाइम्स या तो ऐड करना है या इनको हम 13 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, बिकॉज इट्स गोइंग टू गो सो ऑन अंटिल 13th पैकेट. ठीक है, और 13 पैकेट में भी क्या है? 25. तो द सिंपल थिंग वी वुड डू इज दैट वी आर गोना मल्टीप्लाई. ठीक है, हम जल्दी से इनको पुट करते हैं. 25 सबसे बड़ा है तो उसको ऊपर लिखेंगे एंड देन विल राइट 13 अंडर इट.
and then we'll multiply. Put the multiplication sign over here. 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 15. 5 हम लिखेंगे सिर्फ यहाँ पर और 1 कैरी हो जाएगा. ठीक है, रफ वर्क के लिए आपको यहाँ लिख के दे रही हूँ. 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15. 5 हम लिखेंगे, 1 हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. 3 2s are 6, so we write over here 6. Next we are going to do what the step 2 was, that we have to put the 0 in the next line before multiplying the number the 10th digit. ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे सिंपली, और उसके बाद 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 5s are 5 and 1 2s are 2. So that means this is the final number and we have to add the both numbers. ठीक है, तो हमें इन दोनों numbers को add करना है. 5 plus 0 is 5. 6 plus 5 is 11. That means 1 हम यहाँ लिखेंगे और 1 हम carry forward कर देंगे. 2 plus 1 is 3. So we'll write 3 over here. Okay. So the answer that we got is 315. तो कितने balloons उसने sell किए हैं? उसने 315 balloons sell किए हैं, and we write the answer over here. He sold 315 balloons all together. All together means इकट्ठे उसने कितने sold किए. ठीक है. So this is how you can read the word problems and solve them very easily. Alright. See you guys in the next video with some more examples to solve.